So welcome back again in the series of lectures on wireless communications, and today's topic of discussion is different wireless communication systems. Let's move ahead. These are some examples of wireless systems that we see in our day-to-day lives. हम लोग इसको घरों में भी यूज करते हैं. The garage door opener, the remote controller which we use in our home for handling the different equipments, cordless telephones, handheld walkie-talkies you might have seen. Pager is also a communication device, and then the cellular telephones, of course. So all these are the examples of the wireless systems. Now before going ahead, we should understand that what are the different terminologies that we come across over the entire journey of these wireless systems. So some definitions are very important to understand. First is the base station. So base station is nothing but a fixed station in a mobile radio system used for radio communication with mobile stations, and base stations are located at the center or on the edge of the coverage region. So base station is nothing but a station which is connecting me means the user, to the center of the mobile station or the mobile station. So base station is the interface between the user and the mobile station. Mobile station is nothing but the center, me as the user, and base station is acting as the interface. So whatever transmission and reception which has to be established to the mobile station, that is established by using the interface which is known as the base station. और बेस स्टेशन को आपको अगर इजी लैंग्वेज में समझना है तो आप जो भी टावर देखते हैं अपने आसपास, वो सब बेस स्टेशन के एग्जांपल है. ठीक है. सेकंड होता है कंट्रोल चैनल. मुझे ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए कॉल सेटअप करना है, कॉल रिक्वेस्ट करनी है. ठीक है. कोई कंट्रोल पर्पसेस के लिए अगर उसको यूज करना है तो कंट्रोल चैनल को हम लोग यूज करते हैं. Now there is a concept of forward channel and the reverse channel. If base station is sending me the information, or the base station is sending the user the information, then that is known as the forward channel. And if user is sending some information to the base station, then that is known as the reverse channel. Now there is some systems of communication, that is the simplex, then that is the half duplex, and that is the full duplex. So simplex system is the single-ended system. अगर मुझे आपको कोई डेटा ट्रांसमिट करना है किसी एक टाइम इंस्टेंट में तो मैं कर सकता हूँ. And then if you want to transmit some data to me, some voice signals to me, then you can also do. But there has to be two systems. We cannot use the same channel for transmission and reception. This is known as the one-end system, simplex system. In case of the half duplex system, the two-way communication is possible. We can send and receive the data and the signals over the same channel, but the time cannot remain the same. एक ही टाइम में ट्रांसमीटर और रिसीवर जो हैं वो डेटा ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर सकते हैं. अलग अलग टाइम पे वो पॉसिबल होगा, बट दोनों एंड से पॉसिबल है वो कम्युनिकेशन जो सिंप्लेक्स में नहीं था. नाउ इन केस ऑफ द डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स सिस्टम, द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन बोथ आर पॉसिबल एट द सेम टाइम इंस्टेंट. सो व्हाट टेक्नोलॉजी दैट वी यूज इन डे टू डे, आवर डे टू डे लाइव्स, जो हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में, वो होता है फुल डुप्लेक्स सिस्टम. हम एक ही समय पे ट्रांसमिट और रिसीव कर लेते हैं डेटा को, है ना. उसके लिए हमको वेट नहीं करना पड़ता है. ठीक है. सो ये फुल डुप्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल है. हैंड ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. हैंड ऑफ बहुत ज़रूरी था. हैंड ऑफ की वजह से आप एक मोबाइल स्टेशन के बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में, एक मोबाइल स्टेशन से दूसरे मोबाइल स्टेशन में भी स्विच कर सकते हैं. ओके. तो हैंड ऑफ फैसिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हैंड ऑफ फैसिलिटी के ज़रिए ही बहुत सारे जो लैकिंग पॉइंट्स थे मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसको क्या किया गया, रेक्टिफाई किया गया. सपोज इफ आई नीड अ बेटर कवरेज एरिया, इफ आई नीड अ बेटर डेटा कनेक्टिविटी, इफ आई एम feeling, if the system is feeling, not you, because you cannot decide where to switch, it is automatically decided. So if your mobile is not getting the correct signal, it tries to switch over to the next base station because of this handoff technology. Okay. Or if you are moving from one place to another, let us say you are moving from Raipur to Bhilai, and there are several base stations between Raipur to Bhilai. Are you the person who changes that base stations? No, it gets automatically changed over the base stations, and in the entire area of that coverage, it seems that there is a smooth transition between one base station to another base station.
ओके, ये फील नहीं होने दिया जाता है यूजर को कि भाई इस बेस स्टेशन से उस बेस स्टेशन में स्विचिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि उसको कनेक्टिविटी कॉल्स की, डेटा की मिलती रहती है ओवर द एंटायर कवरेज एरिया। ये है ब्यूटी हैंड ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज द मोबाइल स्टेशन। एज ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, मोबाइल स्टेशन एक सेंटर की तरह एक्ट करेगा। एक मोबाइल स्टेशन, नीचे मोबाइल स्विचिंग सेंटर भी लिखा हुआ है। ठीक है, मोबाइल स्टेशन जो है वो मोबाइल भी हो सकता है, मतलब पोर्टेबल भी हो सकता है और कहीं पे इंस्टॉल्ड भी हो सकता है। ऐसे ही जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है वो कॉल राउटिंग में हेल्प करता है कि कहाँ पर मुझे कॉल को कनेक्ट करना है। जैसे अगर एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तो यूजिंग दिस मोबाइल स्विचिंग सेंटर यू कैन डू दैट। And this MSC is connected with the PSTN. PSTN stands for Public Switching Telecommunication Network. Now this Public Switching Telecommunication or Telephony Network is the facility that is provided by the service provider, I mean the BSNL और the Airtel। तो एक PSTN नेटवर्क है जिसकी एक फिक्स लाइन आई हुई है, उस फिक्स लाइन से मैंने MSC को कनेक्ट किया हुआ है और उस MSC से बहुत सारे बेस स्टेशन कनेक्टेड हैं। डायग्राम में जब आप लोग देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। पेज इज नथिंग बट अ सर्विस मैसेज। जैसे एक सर्विस मैसेज हमको मिलता है कभी कभी सब्सक्राइबर हमारे जो कंपनीज है उनकी तरफ से, है ना, तो उस तरीके के मैसेज जो पेज के थ्रू भेजे जाते हैं। तो पेज इज बेसिकली नथिंग बट अ ब्रीफ मैसेज, यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज ब्रॉडकास्टेड ओवर द एंटायर सर्विस एरिया। ओके, नाउ द रिवर्स चैनल एंड द फॉरवर्ड चैनल। फॉरवर्ड चैनल, रिवर्स चैनल मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया। Now there is a roaming facility. If a mobile station which operates in a service area other than the that area for which that service has been subscribed. So if you are subscribed for the Airtel in the Chhattisgarh, that same Airtel if you use in the Maharashtra, then you have to use the roaming facility. As simple as that, ये आप सब लोग जानते हैं। Simplex system मैंने आपको बता दिया। Subscriber is nothing but who pays for that particular subscription. We all are the subscribers for different companies in which we have been registered. Trans receiver is a very important invention, क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसमिशन और रिसेप्शन सेम डिवाइस से पॉसिबल होता है। हमको स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है ये हमको प्रोवाइड करता है ट्रांस रिसीवर सिस्टम। ओके, now let us understand the different wireless communication systems जो over the years develop हुए। पहला सिस्टम था पेजिंग सिस्टम। In the paging system, you can see at the left hand side there is a landline phone which has been shown, and that is nothing but the public switching telephone network. And through that public switching telephone network, a paging control center is connected, which is connected to the different cities and different paging terminal. So you can assume different city names there. Okay, and that city is either connected through a landline link, यहाँ पे लैंडलाइन लिंक यूज की गई है, यहाँ पे भी लैंडलाइन लिंक है, और इट कैन बी कनेक्टेड टू द सैटेलाइट लिंक। सो इट मे बी वायर्ड और इट मे बी वायरलेस डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ओके, एंड डेफिनेटली दिस टावर इज रिप्रेजेंटिंग द बेस स्टेशन, एंड दिस बेस स्टेशन इज कनेक्टेड विद द यूजर वाया द वायरलेस चैनल और द एयर, यू कैन से। नाउ पेजिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि इसका कवरेज एरिया बहुत लिमिटेड था, फ्यू किलोमीटर्स से ज़्यादा इसका कवरेज एरिया नहीं था, and the speed was very low. The system was not full duplex. Okay, same channel पे ट्रांसमिशन रिसेप्शन की फैसिलिटी नहीं थी। तो ये सारे लैकुनास थे पेजिंग सिस्टम में, which has been rectified over the years through the other inventions. So next कैटेगरी जो आती है इसमें वो आती है कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम की। And the cordless telephone system is again having the same PSTN. PSTN is my service provider. Let us say I am having BSNL for my facility or my communication facility that is connected to the base station, but this base station is fixed. Okay, तो क्योंकि फिक्स बेस स्टेशन है और डेफिनेटली मैं वायरलेस लिंक से कनेक्टेड हूँ, कॉर्डलेस हैंडसेट से मतलब यूजर से, बट इस फिक्स बेस स्टेशन होने के कारण we cannot use the handoff facility. I already told you about the handoff facility. I can switch from one base station to another base station if I am facing some problem for the coverage or for the data connectivity. But अगर fixed हो वो connection तो handoff facility possible नहीं होती। So cordless telephone system ही वो system है जिससे हमने inception लिया cellular network का, which we use in nowadays, which is the modern technology.
So you can say that the initial conception was made through this cordless telephone system. और हम लोगों ने देखा भी है हिस्ट्री में कि 1981 to 1991 before the invention of the GSM, cordless system was there. Okay, the UMTS technology. Okay, so all those things were there by the cordless telephone system. The only problem was again the coverage. Coverage has been increased from the previous communication system, that is the paging system, but वो भी लिमिटेड ही था. कुछ 10,000 किलोमीटर तक का कवरेज उसने दे दिया. उसके बाद का अगर कवरेज देना है तो उसमें प्रॉब्लम. ठीक है. एंड देन बेस स्टेशन फिक्स, हम बेस स्टेशन स्विच भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन ये फुल डुप्लेक्स सिस्टम था. ठीक है. इसमें हम कम्युनिकेशन जो है वो वन एंड से दूसरे एंड पे, दूसरे एंड से इस एंड पे एट द सेम टाइम स्टेंड कर सकते थे. ठीक है. इसलिए मैंने आपको बताया कि कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम ने आपके नेक्स्ट इन्वेंशन की, जो हम लोगों ने इन्वेंट किया सेल्युलर टेक्नोलॉजी, उसका बेसिस था ये कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम विद सम ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस. नाउ दिस इज द सेल्युलर टेलीफोन सिस्टम विच वी यूज. अब इसमें आप क्या देख सकते हैं कि एक एरिया है जिसको डिफरेंट सेल्स में डिवाइड किया गया. डिफरेंट हेक्सागोनल सेल्स यू कैन सी इन द पिक्चर, और सब हेक्सागोनल सेल्स में एक एक टावर वहाँ पे इंस्टॉल्ड है. एक टावर इंस्टॉल्ड है. कहाँ देखते हैं हम लोग ये? अपने शहर में देखते हैं, अपनी सिटीज में देखते हैं. देयर आर डिफरेंट टावर्स इंस्टॉल्ड इन द सिटी, इन द भिलाई, इन सुपेला, नेहरू नगर, दुर्ग, यू कैन से एन नंबर ऑफ टावर्स आर देयर. सो व्हाट दोस टावर्स आर? Those towers are nothing but the base station, and those base stations are connected to this MSC. Okay, and MSC is nothing but mobile switching center, और मोबाइल स्विचिंग सेंटर किससे कनेक्टेड है? PSTN से. मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने अपना जो नेटवर्क है वो शेयर किया MSC से, और MSC जो है इस पूरे इंटायर एरिया में कवरेज को हैंडल कर रहा है. सपोज आई एम मूविंग बाय कार फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस एंड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. ओके, from this place to this place. Now if I feel that the coverage problem is there, then the system automatically sends request to the MSC that I am not getting the coverage. I am not getting the coverage here. So this base stations services can be transferred to the neighboring base station or from to this base station. और इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट कर रहे हो तो आपको उस एरिया में डिफरेंट टावर्स मिलेंगे, सेम कंपनी के भी हो सकते हैं, है ना. तो जब आप डिफरेंट लोकेशंस पे आप विजिट करते हो तो कवरेज आपको सेम मिलता है. ऐसा नहीं होता कि यहाँ गए और वहाँ गए तो कवरेज नहीं मिला. हाँ, कवरेज का प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, बट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है कि आपके ट्रांजिशन से, आपके मूवमेंट से वो कनेक्टिविटी इंटरप्ट या डिस्टर्ब नहीं हो. ठीक है, अनलेस आप एक ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे कवरेज की ज़्यादा ही दिक्कत है. ठीक, तो ये ऑटोमेटिक जो फैसिलिटी है वो यूज़र को नहीं पता चलता है कि आप इस बेस स्टेशन से कनेक्टेड है या उस बेस स्टेशन से कनेक्टेड है, इस टावर से कनेक्टेड है या उस टावर से कनेक्टेड है. ये यूज़र का काम नहीं है. नीदर यू कैन आइडेंटिफाई नॉर यू हैव द कंट्रोल टू स्विच ओवर फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन. द सिस्टम ऑटोमेटिकली tracks the coverage of the particular mobile device using that SIM. Okay, and when it identifies that some problem is there of the coverage or the data connectivity, it automatically switches over the base station or the towers, you can say. So this is how cellular system has made today's life very simple. और आपको ये समझ में भी आना ही चाहिए कि भाई अगर एक कवरेज एरिया को मैं 10-15 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और हर जगह मैं टावर लगा दूं तो उसको कवर करना ज़्यादा ईजी है. उसकी हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे आ जाते हैं, बट वही तो हमको हैंडल करना है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए एक सेंटर बनाया गया जिसको हम MSC बोलते हैं, और MSC से सारे बेस स्टेशन कनेक्टेड होते हैं. हम लोग और पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑल्सो व्हेन वी go into the deeper of the mobile communications architecture. So this is all for today's discussion. Okay, in next lecture we will see some other concepts of wireless communication. Thank you for listening and watching.